Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the historical perspective of viruses. So let's move to the class board. So dear students, historical perspective of viruses, an important long question और इसमें से short और MCQs भी बनेंगे काफ़ी, उसको साथ साथ मैं मार्क करवाता रहूँगा आपको। तो इससे प्रीवियस हमने बात की थी कि हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो स्टार्ट होती है फ्रॉम 1796, तो उसमें हमने डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया तो एडवर्ड जेनर। तो उसकी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि उसने किस तरह से डिस्कवर किया वैक्सीनेशन के हवाले से। और फिर हमने ये भी बात की कि फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड वैक्सीनेशन वाज यूज्ड बाय द वर्ड वैक्सीनेशन और द टर्म वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय और यूज्ड बाय, जी डियर स्टूडेंट्स, किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? बाय Louis Pasteur, by Louis Pasteur। क्लियर? और फिर डियर स्टूडेंट्स कहानी आगे बढ़ती है। इन 1884, उसके बाद फिर कहानी चलती है 1884 में one of the Pasteur's associate, Pasteur का ही एक एसोसिएट था by the name of Charles Chamberlain, in 1884, one of the Pasteur's associate by the name of Charles Chamberlain discovered that the agent responsible for rabies का नाम सुना डियर स्टूडेंट आपने? Disease which is caused by a highly contagious disease caused by the bite of rabid dogs, जिनको पागल कुत्ते कहते हैं, rabid dogs and foxes and cats and bats etc. like these animals. So उनके काटने से ये बीमारी होती है, ठीक है, और आमतौर पर इसमें ये नर्वस सिस्टम को बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। और इस बीमारी के अंदर यहाँ पर जो हमारे थ्रोट होता है, इसका पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्पैज्म होता है, मसल इसके मसल्स जो होते हैं वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इवन के किसी भी तरह का लिक्विड निगलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ऐसे शख्स को पानी से खौफ होता है। आपने सुना ना कि जिसको पागल कुत्ता काट ले तो फिर उसको पानी से खौफ आता है। सो एक्चुअली द एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक वो मतलब कि वो कंट्रोवर्शियल चला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द बायोलॉजिस्ट दे से दैट, द फिजिशियंस दे से दैट एक्चुअली वो यहाँ का स्पैज्म होने की वजह से यहाँ के मसल्स इतने पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि इवन के द पर्सन इज़ अनएबल टू स्वेलो द स्लाइवा,
वो अपना थूक भी नहीं निकल सकता, तो उस यानी कि इतना ये पेनफुल होता है। तो इसका खौफ होता है कि वो पानी का सोचता है या पानी को देखता है कि अब इसको अगर पीना पड़ेगा या इसको निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से वो एक्चुअल उसके जो रीज़न है वो उसके पीछे ये बताई जाती है। क्लियर? सो स्पैज्म, और ये इस तरह से क्रिएट भी हो जाता है, इसके सोचने से भी ये जो है मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। खैर, सो चार्ल्स कैम्बरलैंड ने ये डिस्कवर किया द एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज़, रेबीज़ के लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, can pass through porcelain filters, can pass through porcelain filters। ये बेसिकली इन्होंने ही इजाद किए थे ये फिल्टर्स। इनको इसी वजह से इन पोर्सलिन फिल्टर्स को कैम्बरलैंड फिल्टर्स भी कहा जाता है, इन पोर्सलिन फिल्टर्स को, ऑल्सो नोन एज पैस्चर कैम्बरलैंड फिल्टर्स। तो ये बेसिकली जो चीनी के जो बर्तन होते हैं, लाइक आपने देखा ना, चीनी के जो बर्तन होते हैं, ये एक स्पेसिफिक एक मिट्टी होती है, सो ये उससे बने होते हैं। ठीक है, तो पोर्सलिन फिल्टर्स उन्होंने देखा कि उसमें से पास कर सकता है, थ्रू विच द बैक्टीरिया कैन नॉट पास, जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता, उसमें से जो एजेंट है रेबीज का वो पास कर सकता है। सो एज इन दोज डेज वायरस was used as a term to describe toxic agent or toxic material. He named, means the Cumberland, he named these unseen agents as filterable viruses। उनको क्या नाम दे दिया गया, उन अनसीन पार्टिकल्स को, द फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दे दिया गया। Clear? Now, dear students, in 1892, there was a scientist by the name of Ivanovsky, found that the agent responsible for tobacco mosaic disease, the agent responsible for tobacco mosaic disease is filterable, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो है, ये तंबाकू के पत्तों के ऊपर एक बीमारी है जिसमें उसमें मुख्तलिफ तरह की डिस्कलरेशंस और कॉलोनीज बन जाती हैं। तो उसने क्या नोट किया एवानोस्की ने कि जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है वो फिल्टरेबल है। फिल्टरेबल का मतलब कि वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है। किस तरह से उसने देखा, ही यूज्ड the ground up
material from infected plants, जो टोबैको मोज़ैक इस डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके थे, वहां से उन्होंने पत्ते लिए, उनको अच्छा खासा पीसा उनको, एंड मेक इट बैक्टीरिया फ्री, उनको बैक्टीरिया फ्री बनाया। कैसे? बाय फिल्टरिंग एंड मेक इट बैक्टीरिया फ्री। बट ही नोटिस्ड that when the filtrate is transferred or poured on the healthy leaves or healthy plant, on the leaves of healthy plant, it caused disease. Clear? कि उसने अच्छा खासा वो इन्फेक्टेड प्लांट से एक पत्ता लिया जो कि इन्फेक्ट हो चुका था टोबैको मोज़ैक डिजीज़ से, उसको मैश किया, उसको ग्राउंड अप किया, पीसा और उसका फिल्ट्रेट बनाया, और फिर उसके जो फिल्ट्रेट में देखा कि उसको बैक्टीरिया फ्री बनाया गया। बैक्टीरिया फ्री का मतलब है उसको फिल्टर से, वो पोर्सलिन फिल्टर्स में से पास किया गया, नाउ सोल्यूशन था वो बैक्टीरिया फ्री बन गया। अब जो फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट समझते हैं ना किसे कहते हैं? जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो वाटर फिल्टर पेपर में से पास कर जाता है उससे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो वो फिल्ट्रेट के अंदर जो उसने नोटिस किया कि उस फिल्ट्रेट को फिर उसने शिफ्ट किया हेल्दी लीव्स के ऊपर उस प्लांट की, तो वो भी इन्फेक्ट हो गए। ही देन he thought that the agent for tobacco mosaic disease might be a virus. Clear? After that, the filterable viruses or the agents were also seen in various other victims of diseases related to these ultra microscopic agents like in 1898 in foot and mouth disease, and in 1901 the victims of yellow fever. फुट एंड माउथ डिजीज़ डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एनिमल्स और कैटल्स ख़ास तौर पर ये उनकी डिजीज़ है जिसमें उनके माउथ और फुट के दरमियान में वो लेजन्स और सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं और उन पे वो छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं और पेनफुल होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से येलो फीवर ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो 1901 में दरियाफ्त हुई थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको मेंशन भी कर दिया। सो
इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। जैसे मलेरिया जो है वो भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, डेंगू फीवर वो भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। इस तरह से येलो फीवर ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट होती है इनटू द ह्यूमंस। और आम तौर पर इसमें ड्यू टू हैवी ब्रेकडाउन, जो स्किन का हैवी ब्रेकडाउन ऑफ द RBCs, the color of the skin becomes yellow. So that is why it is certainly some people they call it as the yellow fever. Clear? उसके बाद dear students, there were in 1935 there was a scientist by the name of Stanley. He was the first who purified the agent responsible for tobacco, mosaic disease, that is called tobacco mosaic virus और TMV इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसको उसने प्योरीफाई किया एंड ही क्रिस्टलाइज्ड द TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस। उसके बाद फिर इन वायरसेस को केमिकली एनालाइज किया गया। द केमिकल एनालिसिस of viruses showed that they are made up of nucleic acids that might be DNA or RNA and a protein coat. Clear? One thing more, dear students, in 1915 there was a scientist by the name of BAORD. Discovered that the bacterial colonies undergo lysis. Lysis means the breakdown or disappearance. Clear? उनका गायब हो जाना या डिसअपियर हो जाना, डिसअपियर और ब्रेकडाउन। Clear? Undergo lysis and even when the colonies, जो lytic colonies हैं, the colonies which had undergone lysis if transferred to the normal colonies,
the lytic effect start. Or the lytic effect started. And A1, the highly diluted material from the lytic colonies had the same effect, while heating the filtrate stops the lytic effect. Clear? So that was what he observed, the tward, कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज थी जो कि खुद ब खुद ही गायब होना शुरू हो जाएं, उनका लाइसिस स्टार्ट हो गया। तो उसने क्या किया, वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल उठाया और नॉर्मल कॉलोनीज के ऊपर शिफ्ट किया। जब उसने नॉर्मल कॉलोनीज के ऊपर शिफ्ट किया तो उसने क्या देखा कि वो भी उनके अंदर भी लिटिक इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स, उन्होंने ट्वार्ट ने क्या किया कि वहाँ से उन्होंने मटेरियल उठाकर और जब उसके ऊपर शिफ्ट किया, लाइसिस स्टार्ट, सो हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल जो है उसका इफेक्ट भी सेम रहा, वही लिटिक इफेक्ट रहा। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि एक्चुअली कि आप उसमें बहुत कम क्वांटिटी सॉल्यूट की रह जाए, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट। लाइक आपने एसिड्स देखे, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। डाइल्यूट में क्या किया है तो उसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है, जिसमें सॉल्यूट कम हो जाता है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाता है। तो हाईली डाइल्यूटेड का मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर है और बहुत ही माइन्यूट वो एजेंट है। सो उसने भी लिटिक इफेक्ट शो किया। लेकिन जब उसको फिल्ट्रेट को हीट करके और फिर उन बैक्टीरियल कॉलोनीज के ऊपर डाला गया, सो उनका जो लिटिक इफेक्ट था वो ख़त्म हो चुका था। इसका मतलब था देयर इज समथिंग लिविंग जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लिटिक इफेक्ट के लिए। और इसी फिनोमेना को फिर रीडिस्कवर किया था इन 1917 द डी हैरले, another scientist, he rediscovered the phenomena and he called those agents जो कैलिटिक इफेक्ट कॉज कर रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर उनकी लाइसिस कर रहे थे, उनको ख़त्म कर रहे थे, एजेंट्स एज बैक्टीरियोफेजेस, which means bacteria eater. बैक्टीरिया को खाने वाले। एक्चुअली वो इन्फेक्ट करते थे। इन्फेक्ट करने के बाद आगे चलकर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसमें आपको मज़ीद इसमें समझ आ जाएगी, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि जब बैक्टीरियोफेजिस, ये बेसिकली दीज आर द वायरसेस। बैक्टीरियोफेज के वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर फिर अपनी वो रिप्रोडक्शन करते हैं और उसको फाड़ के निकल जाते हैं, उनको बर्स्ट करके निकल जाती हैं। सो वो बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो बैक्टीरियल कॉलोनीज वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। So same effect was and the same phenomena was rediscovered by D. Harrelly in 1917. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।